Hey y'all, this is Anna Alexander. Welcome to my basement on this day of days that I know a bunch of y'all probably thought was never going to happen. And truthfully, I didn't think would happen either. But we are here based on a lot of y'all's recommendation. It is finally, you saw the thumbnail, it's Dangal, y'all. First time watching. And the reason it has taken so long is because in my area of the world, I couldn't find it. I could get a DVD copy, possibly, which wasn't going to help us all. I don't have that equipment. Finally got my hands on a digital copy. Cool. No English subtitles. Got English subtitles. Yay. Realized the file sizes were different. Why? Because the version I had, the songs were cut out. So I think I have it. I think I have all the pieces and we have a full movie for me to react to. Now, do not come at me, y'all, if it's not in the dialect you prefer. I have no idea what dialect it is, but we're here. We are watching it. What do I know about this film? It's a biopic, wrestling, Amir Khan, who I've enjoyed the Amir Khan films that you have all suggested. I know it's going to end well, but this film, I'm going to hazard a guess, is about the journey. It's not about the destination. So I'm excited to go on the journey, and I'm so excited that you are here with me as well. So we're gonna get to it. I've got the cozy blanket. I've got all my beverages. This thing's 2.5 hours long. I have all of you. Thank you for subscribing and commenting and making suggestions. There's a lot of content out there, and it's nice when you all narrow it down. And so far, you've been picking winners. I think this is gonna be another one, right? Right, okay. So let's get to it. ना अब काफी रोमांचक मुकाबले की उम्मीद आ गया नीचे आ जाऊं ना पकड़ क्या खड़िया रहे So Olympics, that was 88, right? Why did I think this was set earlier in like the 60s or 70s? पर कोई बढ़ावा दे तब ना पैसे ना फैसिलिटी किस तरह यहाँ जीतेंगे मेडल अपने छोरे सिर्फ मुंह चलाने से कुश्ती जीती जाती ना भाई साहब तो आप तो कब के मेडल जीत चुके होते हैं Is that a challenge? कभी अखाड़े में उतर के देख लंगोट से पहले हवा टाइट हो जाएगी आपकी लगता है कई बार हुई है भाई साहब So much smack talk already. Do they know of each other? अखाड़ा होता ना तो तेरी कर देता अखाड़े की क्या जरूरत है Now the moment we were all waiting for. Fight. There is palpable excitement in the air. Palpable. Both the wrestlers were walking. So this man just walks in and says, yeah, I'm new here. Let's fight. Like, Referee की whistle और ये मैच शुरू. there's no mat beneath them, is there? So that's gonna hurt. He's down. Overconfidence कभी-कभी नुकसानदेह साबित हो सकता है. Overconfidence can prove fatal. That will knock the wind out of you. था ये समझ में नहीं आया क्या हुआ. Yeah, I like the overlay of the commentary from the actual match on the screen to this. And it's over. इतनी जल्दी चित हो जाएगा. पूरा मैच. So who won the actual match? स्टेट लेवल चैंपियन को हराया तूने अरे दिल छोटा मत कर नेशनल लेवल चैंपियन से आ रहा है तू So he didn't know who he was talking smack to. That was a Disney film. Interesting. Why couldn't I find it in Disney? सिर्फ बॉडी बनाने से कोई पहलवान नहीं बना जाता इधर आ बेटा पहलवानी जो है ना वो खून में होती है भाई साहब खून में यो ले दूध पी लेना Oh, milk. Milk was the reward. Okay. So how did they age and de-age him? Because he looks smaller in this flashback. How did they do that? अरे जब थाली में रोटी ना होगी तो मेडल खाएगा के Oh. जो नौकरी मिल रही है चुपचाप कर ले
change him. That's amazing. पर देसी पहलवान के लिए कुछ ना करे तो बेचारा पहलवान क्या करेगा? आप देश के लिए मेडल नहीं ला पाए, इसमें आपकी गलती थोड़ी ना थी। Was he given the opportunity to compete on the Olympic team? Or did he have to drop out before that chance? जो मैं करना चाहता था वो हमारा बेटा करके दिखावेगा। Oh, he better have a son then. देश के लिए गोल्ड जीतेगा हमारा बेटा। छोरी हुई है। Don't look sad. कोई ना। It's okay. ज्ञानियों का ज्ञान था, ताऊ ताई का कान था, और हर किसी के पास छोरा पैदा करने का अचूक प्लान था। Jeez. सफेद तिल के लड्डू बाजरे की रोटी में लपेट के उल्टे हाथ से सूरज निकलने से पहले खिला देना, छोरा पक्का। Not the right hand, the left hand. सच्चे मन से जाप करते रहना, हैं? He's just gonna keep having girls. डिलीवरी का दिन आ चुका था और आधा गांव भी Oh God. Oh छोरा होने no. का क्रेडिट लेने। Oh no. छोरी हुई है। पर इन चूक समाधानों में आखिर चूक थी किसकी? That's terrible pressure. मैं आपको छोरा ना दे पाई। I'm sorry, 1988, you know what brings about a boy and a girl. गीता और बबीता दोनों ही बहुत प्यारी है मन में, पर मेरा जो सपना है ना सिर्फ छोरा ही पूरा कर सके। What about all the boys in the village? Couldn't all the boys in his village carry on his dream? पर शायद भगवान ने भी जिद पकड़ ली थी, तीसरी भी छोरी हुई और चौथी भी। 4 girls. He throws girls. ओ महावीर, छोरा हुआ मन में लाडू तो खाता जा। That's just rude. That's just so rude. Jeez. What sight is this? आप भी बोलो ना कुछ। देखो ना भाई साहब कितनी बुरी तरह से मारे हैं। सुझा दिया है मार मार के। सुझा दिया मार मार के। Because क्यों मारा? गीता बबीता ने मारा है। without a scratch. But why did they beat them? Rest of the story, please. शुरुआत इन्ना करी थी पापा। मना कुतिया कह रहा था बबीता ने कमीनी। हम ना भी दर दिए 2-4। आपकी छोरी है इसलिए छोड़ दिया भाई साहब। And you will kick our asses. Is that the subtext there? आग कैसे नहीं मारेंगे पापा। पहले यो बता मारिया कैसे? उसने मना कुतिया बोला तो मैं तो चुप रही, लेकिन उसने बबीता को कमीनी कह दिया। बस मना लपक के। Leffy, she's like, this is what went down. भी आ गया। मन ने उसके बाड़ पकड़ के नीचे पटक दिया और पीठ पे कोस Well, their technique is a little rudimentary, but कहते हैं डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। यहाँ तो ताऊ जी को 2-2 लाइफ गार्ड मिल गए थे। यो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। so why is the nephew the narrator in this adventure? इनके खून में पहलवानी है। आज के बाद यो सिर्फ पहलवानी करेंगे। छोरियों के हाथ पैर टूट गए तो जुड़वा लेवेंगे। पैसे कहाँ से आवेंगे? That's a big question. पता नहीं, बस 1 साड़ दे दे मन ने। 1 साड़ तक तो अपने कलेजे पे पत्थर रख ले। अगर गलत साबित हो गया। What about the girls' feelings? Do they want to wrestle? कल सुबह 5 बजे तैयार रहना।
Be ready for what? क्यों पापा? We know. They don't know. तुम दोनों को गोलगप्पे खिलाना है। क्या कर दिया तने? मने लगे तने कुछ करे होगा। खाओ। हाँ भाई थोड़ा और तीखा बना दे। They got this guy at 5 a.m. making this for them? जितना खाना है अभी खा लियो। Is it the last you're gonna eat? क्योंकि आज से तुम दोनों पहलवानों की जिंदगी जियोगी। आज के बाद ना मिलेंगे। पापा सलवार कमीज में भागा नहीं जाता। Oh, he had to give his clothes. Oh, their little shorts. They feel. This is like the 90s, right? So they shouldn't be so out of place or feel so out of place. So if you were going to be a competitive wrestler in India, what age do you begin your training? Because out here, you don't really get introduced to wrestling like this in like junior high. They have it available, which is middle school. 12, 13, 14. There might be clubs that are younger, but I don't think I've seen any of them around here. तो जो भी कहेगी, वो सब कराएंगे मम्मी। बस इस पहलवानी से बचा ले। साल भर के लिए भूल जाओ कि थारे कोई माँ है। Oh no. इतनी जल्दी फिर भी घुसना। Oh, is he having to build his own school, essentially? Training facility? Yeah, we haven't seen him teach him any actual moves, just conditioning, right? गीता और बबीता को तगड़ी प्रैक्टिस करने के लिए तगड़े पहलवानों के साथ लड़ने की जरूरत थी। ओमकार, अपना ओमकार। Is his nephew a wrestler? Has he wrestled? ऐसा और ना बोलने की हिम्मत ना है। तो भेज दे। Oh, he has to do the training. ये तो मना के तुझे टूला गया है। What's a TTSS? खून कमजोर ज्यादा। बुरा नहीं मानना ताऊ जी, छोरियां थोड़ी कमजोर है। मेरे साथ लड़ेगा? अभी आया ताऊ जी। चिट्टू चिट्टू बोलने के लिए सॉरी। सॉरी की बच्ची। सॉरी पापा। बेटा ये कुश्ती है। 3 सॉरी में खेल खत्म हो जाता है। Oh, that's the way to put it. रे जानना है के तेरे में? लेकिन मेरे चौके में मुर्गा ना बनेगा बस। पहलवानों को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। Yeah. मेरे चौके में मांस मछली बनी तो मैं खाना छोड़ दूंगी। तू चाहती है तेरी छोरियां कमजोर पहलवान बने? So are they vegetarian then or vegan? I just thought she didn't want him cooking at all. Not that she wanted him cooking, not wanting him to cook chicken and specifically. 100 रुपए का चिकन 20 रुपए में दे दो और इसमें मेरा फायदा है। देख आज नहीं तो कल गीता बबीता टॉप की पहलवान बढ़ाएंगी और जब लोगों को पता चलेगा कि वो तेरी दुकान का चिकन खाती हैं तो लोग चिकन खरीदने कहाँ जावेंगे? Oh, he's doing the influencer thing. प्याज भून दिया है और यो कढ़ाई वापस मेरे चौके में ना जावेगी। Why is she mad at him? अब चिकन को कढ़ाई में डालिए। I've never cooked chicken. Sorry, I have chicken all the time, so this is blowing my mind. चावल के साथ खाते हैं। वैसे रोटी के साथ भी खा लेते हैं। You got your bread? पहलवानी कर करके तुम दोनों की चाल एकदम मर्दानी हो गई है। Oh, kick her ass. आगे पता नहीं क्या होगा। आगे एक शब्द भी बोला ना तो तेरा मुंह होगा और मेरा मुक्का। आज तो मैं पापा को बोल दूंगी कि पहलवानी जम नहीं रही है। मैं भी। Good luck with that, pumpkins. पापा वो पहलवानी जम नहीं रही है। बबीता को। हाँ?
गीता दीदी तो इतना थक जाती हैं कि क्लास में ही सो जाती हैं। स्कूल में छोरियां गीता दीदी को मर्द मर्द बोल के चिढ़ाती हैं। बताओ। That is sad though. कोई असली प्रॉब्लम हो तो बताओ। हाँ पापा, वो मट्टी में कुश्ती कर करके सारे बाल खराब हो रहे हैं। इसका तो जूं भी पड़ गई। What? शाम को 8 मारी है। Does she really? यो है असली प्रॉब्लम। Oh no. पापा प्लीज, हम ना कोई प्रॉब्लम। Oh no. प्लीज पापा बाल मत कटवाओ। आप जो भी बोलोगे हम करेंगे। Oh no. Oh, this might have gone too far. Because like hair in India is like really, really, really important, isn't it? बाल लगा लेंगे, चू तक ना करेंगे, बस बाल मत कटवाओ पापा प्लीज। प्लीज बाल मत कटवाओ पापा। Oh, poor thing. काट। तो काट। Oh. Oh no. Oh, and he's just whacking at it. That's his job. Oh. Oh, girls. Oh no. And the mother's shawl looks like she's been stabbed in the chest. Oh, poor things. This is traumatizing. This is so traumatizing. Oh, why so short? Oh. Oh no. Oh no. Yeah, he's serious, and you be nice to those girls. बस इतना समझ ले, जो भी कर रहे हो उनके भले के लिए कर रहे हो। Is और वो it? चीज जो पहलवानी से इनका ध्यान हटावेगी, मैं उसने हटा दूंगा। Oh. साथ साथ है। जान दे बबीता, अपना ही टाइम खराब चल रहा है। They will kick your butts. बहुत होगी पहलवानी। Oh. अब दंगल होगा। Street fight. Who are they calling out? अलार्म घड़ी को चालाकी से गुमराह कराया गया। क्या बात है पापा? आज लेट हो गए। उम्र हो गई है। हम ना तो प्रैक्टिस कर लिए। चल बबी। But it's gonna show when you don't wrestle as well as you should be. न जाने कितने लाट्टू वीर गति को प्राप्त हुए। That's diabolical. किस तरह हो जाता है? क्वालिटी पापा जी, क्वालिटी। सुनीता की मेहंदी में जा रही हो? देखो तो। Well, they feel like themselves a little bit more. पापा को मत बताना। 8 के पहले आ जाना। Oh my gosh, how young is the bride? The bride does not look happy. What is happening during this wedding? Oh, Papa found out. Oh, he flat out smacked that child. That wasn't his child to smack. कौन बाप अपनी छोरी से पहलवानी करवाता है, छोरों से लड़वाता है, और जरा सी चूंचा करो तो सर के बाड़ तक कटवा देता है। ऐसा बाप भगवान किसी को ना देवे। काश भगवान ने ऐसा बाप बने दिया होता। थारा बाप कम से कम थारे बारे में सोचता तो है, और जो 14 की हो जाए तो कर दो उसके हाथ पीले, छुड़ा दो पीछा। थारा बाप कम से कम थारे को औलाद का दर्जा तो दे रहा है, ताकि तुम दोनों कुछ बन सको। इसमें गलत क्या कर रहे हैं वो? I don't think that's entirely true. He's trying to relive his glory days, but yeah, they're not facing marriage at 14. That's just wrong. Yeah, so if your alternative is becoming a wrestler, marriage to a stranger. उस दिन एक बात तो मेरी समझ में आ गई थी, पर मेरे खून में पहलवानी कतई ना थी।
दादा उछले मत, कल देख लेना। कल ना हो पाएगा तेरे से। Why not? कल हम रोहतक जा रहे हैं, दंगल लड़ने। He's gonna wrestle? Or they're gonna wrestle? लेकिन मैं दंगल के लिए रेडी ना हूँ, ताऊ जी। रे तेरी बात कौन कर रहा है? What makes him think she's ready? छोरी से दंगल लड़वाओगे? हाँ तो? They don't have girl wrestling at this time period. This is not that long ago. दंगल हो रहा है। बड़ी दूर से आए हैं, लड़े बिना तो जावेंगे नहीं। He's rolling up his sleeves. या तो गीता लड़ेगी, or I'll fight. या तू और मैं। भाई आपको अपनी इज्जत प्यारी ना है तो ना सही, हमने अपनी इज्जत बहुत प्यारी है भाई। तेरी इज्जत तो मैं यहीं उतार दूंगा। Oh. ये ना हो पाएगा भाई साहब। Sure you can. They can totally do it. It's not impossible. There's nothing physically obstructing them from allowing her to fight or wrestle. मतलब? कितने साल से दंगल करा रहे हम? 5। और कितने लोग आते हैं हमारा दंगल देखने? जिस शहर ने आज तक छोरियों को लड़ते हुए नहीं देखा, उस शहर में छोरी छोरों से लड़ने अखाड़े में उतरेंगी तो कितने लोग होंगे? और जो छोरी के हाथ पांव टूट टाट के तो Why do they think she's gonna break a limb? And it's not just any girl; it's a girl with pedigree. अपने सांप निकलने वाली छोरी बहुत देखी होंगी, आग पर चलने वाली छोरी बहुत देखी होंगी। Oh, I hope she delivers. चीटड़ा है तो कहाँ? Yeah, you kind of have to now, pumpkin. अरे किट्टी सड़ भी सड़ ना फट जावे। और फट जावे तो फट जावे ना यार। She gonna wrestle all of them? तो फिर चुन ले किससे हारना है तन्ने? पहली बार जीतेगा अपना किक्कू। She's gonna pick the big kid. दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। मेरी छोरी डर से तो जीत गई है। छोरी है, समझ के लड़ियो। बस छोरी समझ के ना लड़ियो। Well, I hope she does well. She doesn't have to win. She just has to show some skill. And that's way more difficult to wrestle on than a mat, right? Because you're slipping and sliding. There's no real grip. Just flip them once. Just get a point. Just show. There we go. There we go. Oh. Oh, that's disrespectful. Oh. Just flip him over. Ooh. Come on, Gita. But she showed up. She represented. She did not make it easy. It was her first match. शाबाश। और हमारे करतार सिंह की तरफ से गीता कुमारी के लिए 50 रुपए का नगद पुरस्कार। Okay. बच गया तू, वरना थैले में घर जाता। पापा, अगला दंगल लड़ने कब जाना है? She ready? There we go. Oh. तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी। Oh, because Gita eats his chicken. So what's Babita been doing this whole time? Yeah, you don't smack her in the head. चीटे पसना पैगी कर देगी चित कर देगी। Oh, and they had to travel in back of trucks. यो भाई साहब तो चोरी से हर गए। ना तो तू लड़ ले। Yeah, why don't you fight her? गीता कुमारी ने हरियाणा स्टेट टीम में सिलेक्ट होकर और हमें पूरा विश्वास है कि नेशनल सब जूनियर में भी यो बलाली का नाम रोशन करेगी। He still makes them keep their hair that super short. छुट्टी 2 महीने की छोरी का ब्याह है के?
That's the only reason why she could leave? देख भाई 2 महीने हैं तो तू भूल जा छोरी का ब्याह होता तो कुछ सोच लेता मेरे पास और कोई चारा ना था Did he pull out her school? उम्मीद तो मैं छोड़ने से Did he pull her out of school? नौकरी छोड़ दी अब क्या करोगे? Oh, he was trying to take 2 months off from his work. I get it. Oh, that was his job. But who's going to provide for the family to live? There's more than just the two of them. तो स्टेट लेवल में आना कौन सी बड़ी बात है और वो भी लेडीज रेसलिंग में है आपकी चोरी अकेली भागी और फर्स्ट आ गई है मैट लगवा के प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ सर जी स्पोर्ट्स कोटे में फंड आता है इतना तो लेडीज रेसलिंग के लिए बचता है इतना और इतने किताब लड्डू लिया है पर स्पोर्ट पूरा है इंडिया मेडल इसलिए नहीं जीत पाता है They don't get support. क्योंकि कुर्सी पे आप जैसे अफसर बैठे हैं आलू के परोठे खाओगे महावीर सिंह जी Dude, you are oblivious. Is this an elected position? Should somebody run for this position? यू मैट के होता है भाई साहब सिंथेटिक गद्दे होते हैं जिन पे पहलवान कुश्ती लड़ते हैं गद्दे तो गद्दे होते हैं भाई साहब So you gonna make his own mattress? ताऊ जी ने वैसी हमारी नींद हराम कर रखी थी Oh no. और अब वाकई में नींद हराम करने पे तुले हुए But it's the wrong fabric, right? जो तन्ने सामने वाली की कमर पकड़ के उसने घुटनों के बल गिरा दिया तो तन्ने 1 पॉइंट मिलेगा यो करने के कई तरीके हैं यो बस ताऊ जी यो पीठ के बल 3 पॉइंट Why am I the example, Uncle? Can't you just demonstrate this with your words? जो तन्ने सामने वाले की बॉडी को उछाल के इंद्रधनुष की तरियां आर्क बनाते हुए पीठ के बल गिरा दिया तो तन्ने 5 पॉइंट मिल जाएगा This is coming, kid. यो देख This is coming. Yeah, so there's girls wrestling. मेरी मानो तो वापस हो लो ऐसे कुछ खिलाओ पिलाओ हट्टा कट्टा बनाकर अगले साल फिर ले आना Next year. आप बस यो बताओ कि लड़ सके है कि ना जाओ जी लड़ो लड़ो चल नाम लिखा What year is this? गित्ता के आगे बड़े बड़े छोरों ने घुटने टेक दिए थे So these little girls were nice and light. She could flip them around. Oh, but they're out of the ring though. पता ही नहीं चलिया गित्ता जूनियर से सीनियर हो गई और ताऊ जी सीनियर से सीनियर सिटीजन हो गए So is Babita, is she still wrestling then? I'm feeling a bruised tailbone watching this. They're so prickly. So she has her medal. Does it go right by the dad's medal? चलो अब हमने छुट्टी मिलेगी ना सपना अभी पूरा नहीं हुआ है Gold medal. अब जो मैं नेशनल चैंपियन बन गई हूँ मतलब जो भी नेशनल चैंपियन बन जाता है उसने आगे की तैयारी के लिए पटियाला जाना पड़ा है आपसे ट्रेनिंग भी वहीं होगी और कोच भी वहीं का होगा Oh, he would know that though, right? Was he not putting that together? जगह तो अच्छी है बस कोच भी अच्छा हो Who's the coach? Oh, is the coach from the guy from the beginning of the film? That'd be hilarious. Nope, it's not. Not the guy from the beginning. सीखना तो आप भूल जाओ पहले भूलना सीखना होगा जो गलत ट्रेनिंग मिली है उसे भूलना होगा He has no idea who he has in his groupage. आप लोग वही सीखोगे
जो मैं आपको सिखाऊंगा। Is that clear? Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. Oh no. There's gonna be a conflict coming up here. गीता का फादर। अच्छा। ट्रेनिंग भी मन नहीं दी सर। Good. बढ़िया छोरी है सर, काफी स्ट्रांग है और स्टैमिना भी खूब है। He doesn't care. He's collecting a paycheck. He's collecting a paycheck. गीता! काफ और थाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। 90! किसने सिखाया तुझे? He has to go. He has to go. छोड़ने आए थे ना आप? छोड़ दिया। बाकी मुझ पे छोड़ दो। टाइम वेस्ट मत करो। Intermission. We have an intermission? What? So hopefully you enjoyed your intermission. I replenished the lemonade. I'm good to go. Here we go. Last hour. What is the last hour and a half-ish? फैसिलिटी तो जबरदस्त होगी। तन्ने आज प्रैक्टिस करी। और कोच सर भी एकदम टॉप के होंगे ना? बड़ी जल्दी है तन्ने वहाँ जाने की। If you seem too eager to go there, then you must train. Yeah, how come we're not seeing as much of Babita and her story? ओए, टीवी पे डीडीएल जा रही है। उत्तरी, चलना। राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। पलट। 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 Oh, she found her community. People who can relate to what she's been going through. एक खाने से मेडल नहीं हार जाएगी। Well, she hasn't had a sweet in forever. She's letting her hair grow out. Oh. देख अपने पापा की टेक्निक भूल जा। इधर वही सीख जो मैं सिखा रहा हूँ। समझी? If her papa's technique teaches her how to win, she does it. कितने साल हो गए ना मैंने तुम दोनों से जानबूझ के हारते हुए। It is the truth. Sure. वहाँ जो मर्जी आए कर बेटा, बस यहाँ थोड़ा सा संभाल के। मम्मी, असली ट्रेनिंग ना खुल के होती है। हम तो टीवी भी देखते हैं, पिक्चर भी देखते हैं, बाहर भी खा लेते हैं। परफॉर्मेंस में तो कोई कमी ना है मेरे। Has she wrestled? I haven't seen her wrestle anybody yet, though. ट्रेनिंग कैसे चल रही है? सिडनी जा रही है लड़ने। Really? आपने तो देखा ही है, काफी कुछ नया सीखने को मिल रहा है। नई स्ट्रेटजी, दाव पेच, टेक्निक, वेरी गुड। और मैं तो सोच के आई हूँ कि इसने भी सिखा के जाऊंगी। इसने भी तो नेशनल जीतना है। Not a good idea right now. सिर्फ अटैक नहीं करना, Wow. डिफेंस करना भी जरूरी। He's got a little school rolling. अब किस तरह छुड़ावेगी? यो पकड़ के। With more girls. Interesting. Well, this is good. सामने नहीं हाँ, साइड में तो और घुस। ये गलत है मेरी टेक्निक में। यो ज्यादा करेक्ट वाला है। कोच साहब ने सिखाया। More बड़ी पहलवान होगी ये correct. तो। More correct, she says. मैं भी तो देखूं। ऐसा क्या सिखा दिया तेरे कोच साहब ने? Not on तेरा बाप him. ना सिखा पाया। Don't do it on him. Don't do it on him. उसने नहीं, मन ने सिखा। यो अंगूठा इस तरह डाल के। यो सिखाया तेरे कोच साहब ने। इस तरह जीतेगी इंटरनेशनल मेडल। He could have hurt her. मैं रेडी ना थी पापा। हाँ तो रेडी हो ले। Oh, 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 oh no. Oh no. Oh, this is not, oh no. Do you really go after him with everything in you?
I don't think I could spar with my dad. He has bad hamstrings. He pulls them all the time from when he played football. But I forget sometimes how old my dad is. I still think of him as young. He's not as young as he used to be, but he still does stuff. Oh, this is when someone's getting hurt. Someone's getting hurt. She's gonna lose her chance. She gonna lose her chance to fight in Sydney because he hurts her? Is he having a heart attack? I know it's not fight, it's a match, but still. Oh, this is sad. Oh, this is terrible. Oh, she's gonna flip him. She worked for that one. She worked hard. यो तो एक दिन होना ही था. किसी को तो बताना ही था कि पापा के तरीके कमजोर हैं. उनके तरीके कमजोर ना है दीदी. Weak. Weak. वो मत भूलना कि उन्हीं कमजोर तरीकों के दम पे ही आपने नेशनल जीता. Weak. That's right. That's right. तो फिर आप अपने तरीकों पे भरोसा रखो. मैंने तो अभी भी पापा पे भरोसा है. Oh, that was a shot. That was a shot. So who is Babita fighting? Is she doing the same circuit her sister did? Or is she doing something different? Oh. Oh, Gee is getting her ass kicked. और अब तो तू भी नेशनल जीत गई है. तू भी एनएसए जावेगी. And you two will learn techniques I don't approve of. और तेरा पापा एक बार फिर पुराना हो जाएगा. Oh no. यो लॉन्ज है. यहाँ हम फैल के टीवी देखते हैं. ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है दीदी? एक बात बोलो दीदी, बुरा मत मानना. Oh, whenever somebody says that, you're going to be offended. पापा का सिखाया मैंने सब याद है दीदी. आप भूल गई हो. तू ना अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे. मैं अपनी देख लूंगी. Oh, they're going to go head to head, aren't they? एक ही फाइट तो आ रही हूँ. और इसी के साथ ये मैच खत्म. गीता कुमारी मॉस्को वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हो गई है. It was the Worlds. This was the Worlds. इस्तांबुल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गीता की करारी हार. और इंतजार करना होगा गीता को इंटरनेशनल मेडल के लिए. She gonna lose her place? हमने बहुत मेहनत की तो अच्छा खेली भी, बस जीत नहीं पाई. इसका मतलब ये नहीं कि तू कहीं से भी खराब है. Means you're a bad coach. Oh, he looks sad and tired. बबीता से बात हुई. कह रही थी कि ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है. गीता ठीक ना है. एक बार बात तो कर लियो. हेलो गीता. She can't say no. Dude. Oh, poor thing. Run! She needs you, run. Run, go to her. That is a lost child. That is a scream. That is a cry of a child who is lost.
में होने वाले अब तक के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट 19th कॉमनवेल्थ गेम्स के शुरू होने में बस 6 महीने बाकी हैं। Oh no. Well, you don't have to go all the way back to your roots, but well, literally, but एक मेडल तू लाएगी, पर उस कैटेगरी में नहीं जिसमें तू हार रही है, बल्कि उस कैटेगरी में जिसमें तू जीत सकती है। to moving her down. 51 किलो में लड़ेगी तो टिक पाएगी और शायद जीत भी जाए। इनका 4 किलो कम करना है, नया डाइट बना दो। यस सर। कल से तेरी 51 किलो की ट्रेनिंग शुरू। कोई जरूरत ना है वजन कम करने की। तू 55 में ही लड़ेगी और 55 में ही जीतेगी। मैं आ रहा हूँ पटियाला। Oh, now he's going. Now he's going. Okay, so he gets there, and then what's his plan? किस तरह रहोगे 6 महीने? किराए पे। और खाना? बना लूंगा। खाना मैं अपने हाथ दूंगा ताऊ जी। He's going with? He's going with. दीदी की 51 किलो की ट्रेनिंग शुरू करा दी है और डाइट पे भी डाल दिया। 51 की डाइट और ट्रेनिंग तो यहाँ से ले ले। जो कमी रह जाएगी वो मैं पूरी कर दूंगा। Supplement the rest how, sir? What is this plan of yours? तुम दोनों की। 7 बजे। Then you will start at 5. कल सुबह 5 बजे तैयार रहना। Okay. Oh, Babita's going too. Okay. Because they think, oh, they're late. Protein load, girl. Protein load. They need to start showing up on time, though. सर डाइट पे तो डाला था लेकिन पता नहीं कैसे वेट कम नहीं हुआ। अरे रोती रहेगी या कुछ बोलेगी भी? Did she get kicked off the team? सर, इनकी हरकतें देख के मुझे लगता है कि इनको एनएसए की जरूरत नहीं है। आगे आप जो ठीक समझे। It's gonna kick them both off the team? मतलब आप मानती हैं कि आपने गलती की? इनकी बस एक ही गलती है सर, कि इनका बाप बावड़ा है। They have one fault, they have a crappy coach. कि यो एक दिन देश का नाम रोशन करे। कोच सर ने तो 3 मेडल जीतने से मतलब है, भले वो ब्रॉन्ज ही क्यों ना हो। पर मैं तो चाहता हूं कि हमारा देश गोल्ड जीते और यो छोरी ऐसा कर सके सर। आप सब लोग बाहर रुके। Oh, he is beside himself. He is beside himself. Oh. वेट लूज करके लड़ती तो मेडल ला सकती थी। मेडल तो इसने पहले ले आने चाहिए थे कोच साहब, 55 की कैटेगरी में। कुछ तो आपने भी ठीक ना कराया होगा। क्या ठीक नहीं किया? आपने टेक्निक के चक्कर में फंसा के उसका गेम ही उल्टा कर दिया। जो तो वही बात हो गई कि सहवाग को बोला जाए कि भाई तू द्रविड़ की तरह खेल। तो आप ही बता दो, मेडल जीतने के लिए किस तरह कुश्ती लड़ी जाती है? I think he just did. मैं अभी यहीं आपको बता दूं कि कुश्ती किस तरह लड़ी जाती है। अंदर बुलाया जी। Carter wanted to see that. ना आपको एनएसए में आने की अनुमति है, ना इन दोनों को एनएसए से बाहर जाने की। Can't enter doesn't mean you can't give well wishes and ideas and stuff. You can say things. Oh, he can't enter, but he can, right? sittalbhabbi.com Crazycougar.com? What? अगले शो की सारी टिकट कितने में मिलेंगी? जी पिक्चर कौन सी देखनी है? वो हम साथ में लाएं। रोक। This is the only way he can watch a. They must have a VCR, DVD somewhere. Like they got a screen. He can't. Huh. Yeah. Okay. दे दी ना लीड। ये कैसे किया तूने? Oh, is that her friend? Is that her friend? She did that too? कहने को तो एक राउंड सिर्फ 2 मिनट का होता है, पर सोचा जावे तो 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं। उस 1 सेकंड का इंतजार कर जब सामने वाला गलती करे। It is time to welcome the heroes of the Commonwealth Games
दर्शकों द्वारा जोरदार तालियों से उनका स्वागत। गीता काफी नर्वस नजर आ रही हैं। अब देखना यह है कि इंटरनेशनल मैचेस के शुरुआती दौर में ही हार जाने के वो अपने सिलसिले को तोड़ पाती हैं। और ये मेलिसा का शानदार अटैक। गीता थोड़ी सी मुश्किल में। और ये मेलिसा को 1 पॉइंट। She getting in her head. तो टेक्निकल सुपीरियरिटी के कारण ये राउंड हार जाएंगी। Oh. और एडवांटेज मेलिसा को। और ये 2 पॉइंट्स मेलिसा के। Well, she lost that round. Oh no. क्या कर रही है गीता? इतनी बुरी तरह से तुम मत हार। 2 पॉइंट्स फिर से मेलिसा को। और ये 1 पॉइंट मेलिसा को। हारना नहीं है गीता। Dad says so you can't lose. और ये गीता के पास अच्छा मौका। 2 पॉइंट्स गीता को। मेलिसा 3। She's got to win this one. She has to win this one. फिर से शुरुआती दौर में ही हार के बाहर हो जाए। Push her out and tie it. दोनों ही रेसलर्स पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करते हुए। Rainbow her. There we और go. ये गीता के 3 पॉइंट्स। गीता 5, मेलिसा 3। सफलता उनके हाथ नहीं। Wow. देख गीता, आखिरी राउंड है, समझे? संभल के डिफेंड करके खेल, ठीक है? चल। Oh, she gave him a look like, करके खेल। what are you telling me, sir? Trust your papa. मेलिसा का काउंटर अटैक। गीता थोड़ी सी मुश्किल में। 3 पॉइंट्स। Oh no. डिफेंड कर। कोई ना, अटैक करती रहे। स्कोर। संभल कर खेलते हुए ये गीता थोड़ी सी मुश्किल में। काउंटर अटैक। Jeez. Wow. मैच खत्म होने में बस कुछ सेकंड बाकी। क्या गीता मेलिसा को रोक पाएंगी? और इसी के साथ Oh, that was exhausting. गीता का मुकाबला अब होगा नाइजीरिया की नेओमी एडवर्ड्स के साथ, जो कि 2 बार वर्ल्ड चैंपियन। Ooh, the world champion. इतना आसान नहीं होगा इस बार मुकाबला गीता के। One looks like a tank. She moves like a tank. अब वैसे करना है जैसे मैं बोल रहा हूँ, वरना इस नाइजीरियन से तो तू जीतने से रही। इस नाइजीरिया वाली से जीतना मुश्किल है, पर नामुमकिन ना है। अटैक करके खेलना होगा, वरना पॉइंट्स नहीं ले पाएगी। अटैक करके नहीं खेलना है हमने। पॉइंट्स ना मिलेंगे तो वो तावड़ी होगी और मौका देगी। बस वही मौका हमने ना छोड़ना है। Because when she's on the mat, the coach really can't do much anything. गीता उनको रोक के रखे हुई है। और ये रेफरी द्वारा इशारा। That was a look. नाओमी द्वारा गीता की फिंगर्स मोड़ी गई हैं। रेफरी द्वारा उनको वार्निंग। और ये रेफरी ने मुकाबले को रोका और नाओमी अटैक करने का मौका ढूंढती हुई। ये नाओमी का अटैक। 3 पॉइंट्स नाओमी को। Oh, that was thud. गीता की कोशिश अभी भी जारी। नाओमी पहली बार मुकाबले में Oh, मुश्किल है। कर पाएंगी। और ये क्या कर रही है गीता? अटैक करके खेलना। Are you gonna kick him out of the arena? I don't know if he could do that. नाओमी की कोशिश गीता को पकड़ने की, लेकिन नाओमी पूरा जोर लगाती हुई, पर गीता उनको कोई भी मौका नहीं दे रही She's है। wearing her out. So are these rounds you lose your out of the competition, or do you go like into a round robin kind of a thing, like a loser's bracket to come back up? वही मौका हमने ना छोड़ना है। गीता का काउंटर अटैक। और इसी के साथ Ooh. Naomi, look at me. That girl, she's smart, but you're double smart. समन ने जैसा सिखा है मैं वैसे ही लड़ रही हूँ। She's fine as she has learned. खुद को डिफेंड करके रखा हुआ है। और एक बार फिर नाओमी का शानदार अटैक।
Can you flip her over? Ooh. This is so mentally, besides physically, but just mentally exhausting. Just trying to maintain. गीता थोड़ी सी मुश्किल में है, लेकिन उसने नाओमी को रोक के रखा हुआ है. नाओमी Are you gonna roll her? Gonna roll her? दिया नहीं है. और एक बार फिर रेफरी का इशारा. दोनों ही पहलवान. How much time is left? 12 seconds. 12 seconds. और ये गीता का अटैक. नाओमी थोड़ी मुश्किल में. चाहता है. Oh, jeez, that was a move. करने की कोशिश कर रही है. Tie. So what happens in a tie? Sudden death? Sudden death? टॉस जीतने वाले रेसलर को अटैकिंग पोजीशन और मनचाही ग्रिप मिलती है. What kind of rule is this? 99% केसेस में जो टॉस जीतता है वही मैच जीतता है. Well, that's a statistic for you. नाओमी के खिलाफ 30 सेकंड डिफेंड कर पाना लगभग नामुमकिन है. गीता डिफेंड करती हुई और ये नाओमी ने उठा लिया है. गीता थोड़ी सी मुश्किल में. She's gonna throw her. गीता का शानदार डिफेंस. काउंटर अटैक. Oh. और ये गीता ने पॉइंट स्कोर कर दिया है. इस मुकाबले में गीता के जीतने की. Wow, that was a move. नाओमी को क्लिंच में बहुत ही. चला ताऊ जी. अगला मैच भी देख लेते हैं. पता तो चले कि गीता का फाइनल ऑस्ट्रेलिया वाली के साथ है. Yeah, he wants to do recon already. जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई लड़की ने उसको फॉलो किया है और नतीजा आप लोगों के सामने. आ गई ताऊ जी. दिखने में तो बढ़िया लग रही है. में आपका गेम बिल्कुल बदल गया है. ये कैसे हुआ? इसका पूरा क्रेडिट जो है वो मेरे पापा को जाता है. उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करना कभी बंद नहीं करा. अरे महावीर जी. Oh, it's the chicken guy. यो छोरिया तो अड़ गई. बोली गीता दीदी का मैच वहीं जाके देखना है, नहीं तो खाना नहीं खाना. How? वो महावीर सिंह ऑडियंस में बैठ के गीता को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है. कंफ्यूज हो रही है बेचारी. उसकी सुने है मेरी. And she's winning. आप कोच हैं ना, उसे तो आपकी सुननी चाहिए. नहीं सर, वैसे सुन मेरा ही रही है, वरना वो फाइनल तक. वो प्रॉब्लम क्या है? Should be an interesting final tomorrow. Playing an Indian, front of an Indian crowd. Beaten her, of course. I've beaten her twice. First round? Yeah, first round. So, thank you and namaste. Oh! No! That was disrespectful. स्ट्रेटजी क्या है पापा? He doesn't have a strategy. कल की बस एक ही स्ट्रेटजी है बेटा. Survive. कल तन्ने इस तरह लड़ना है कि लोग तन्ने याद रखें. गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती. That's pressure. कल तू जीतेगी तो अकेले नहीं जीतेगी. तेरे साथ उनके जैसी लाखों छोरियां जीतेंगी. Oh, jeez. He just keeps piling it on. जिसको लोगों ने छोरों से कम समझा है, जिसको चूल्हे चौके में झोंका गया है, बच्चे पालने के लिए ब्याया गया है. कल का मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला है बेटा, क्योंकि कल तू सिर्फ उस ऑस्ट्रेलियन से नहीं बल्कि उन सब से लड़ेगी जो छोरियों के बारे में ऐसा सोचते हैं. So much pressure. उत्साह, तिरंगे और जुनून के साथ. Wow. That must have been a hot ticket. तो वो रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन साहब आपसे मिलना चाहते हैं. बाद में मिल लूंगा भाई, अभी मेरी बिट्टी का मैच है. सर बड़े आदमी हैं, बुरा मान जाएंगे. इधर 2 मिनट का काम है. Who cares? It's his daughter's match. तू चल, मैं आता हूँ. आइए. Are they going to try to keep him in a closet? इसका पूरा क्रेडिट मेरे पापा को जाता है. Are they going to lock him in a closet? Or outside the stadium? You can't ले आया भाई. They locked him in a closet. जोरदार तालियों से स्वागत. रखो ये. That's just cruel. That's so cruel.
She has to know that there's something wrong. There's no way he was gonna miss this. I don't give a shit. Keep going, sir. Keep going. Oh no. गीता 3, एंजेलिना 0. बढ़िया बढ़िया. Now, if the coach always steered me wrong, I would just know to do opposite of what the coach was saying. And he's taking away his opportunity to see his child perform. In my head, I'm trying to figure out ways for him to escape that room, and I'm not paying attention to what's happening. There's got to be something. There's a big machine. Flag. There's a chair. साथ ये दूसरा राउंड शुरू. क्या गीता ये राउंड जीतकर इतिहास रच पाएंगी? Of course, she's not going to win this round because we have to have a comeback. और ये एंजेलिना को 2 पॉइंट्स और. गीता 4, एंजेलिना 3 और गीता अच्छा डिफेंस करती हुई. She's going to give up a 4-point lead. Oh no. गीता को बस कुछ और ये 3 पॉइंट. That's good. Yeah, she did. Oh no. पॉइंट्स बनाने का मौका उनके हाथ. और ये गीता ने 1 पॉइंट स्कोर कर लिया है. वक्त धीरे-धीरे समाप्त होता हुआ गीता को अपनी. How does her dad get out with not much left in the match to see? Is he really in the closet the whole time? और अब इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल पाना गीता के लिए काफी मुश्किल होगा. She's gonna have to rainbow throw her, isn't she? सिर्फ 22 सेकंड रह गए हैं. 22 seconds. How does he get out of the closet with 22 seconds left? Run at her. सामने वाले के दिमाग से खेलना है. दाव दिखाना कुछ है और लगाना कुछ. और ये गीता का शानदार मूव. क्या समय उनका साथ देगा? Rainbow thrower! Shot any slower. And he doesn't get to see this. It's terrible. Oh no. Oh, she's gonna crack her neck. That looks painful. That looks painful. It's a goal for Geeta. But her dad didn't get to see it. Oh. Proud moment for India indeed. Her dad isn't there. Oh. But her sister is, yay. But still. I wonder if he could hear it down below or where he's at. Oh, this is a travesty. This is terrible. जैसे कि प्रथा है, गोल्ड मेडल जीतने वाले देश का राष्ट्रगान होगा. He doesn't get to see it. Those motherfuckers. Punch his, oh, not his face. He should punch all their faces. Punch your face. और फिर फाइनली ताऊ जी के मुंह से वो गोल्डन शब्द निकला जिसे सुनने के लिए हमारे कान पिछले 10 साल से तरस गए थे. शाबाश.
think he would have been proud of her anyway. It's been nice to see Babita win also. I'm so mad that he missed everything. I'll have to go look and see if he really was locked in the closet for that final match. And I know, I kept saying fight because I watch way too many action films. But that final match, was he really locked in the closet the whole time and missed the ceremony? This is a story where I'm very much conflicted, and you can play the what if game forever. It's like, what if Mahavir didn't push his girls to wrestling? They would have married young, had children, and just stayed in the home the whole time. Would they have been happier? Maybe, who knows? They would not have known any differently. His need to fulfill his own dream, he foisted on his kids who didn't ask for it. So were they wrestling for themselves or for the pride of their father? Because it seemed as if it wasn't until they had the talk with, I don't know if it was their cousin or a friend who's going, at least your dad cares about you and spends time with you and doesn't think of you as a burden, that they seem to want to participate more in wrestling. Is that a real life thing or is this a movie thing? But at first it did seem rather torturous of what he was putting these young girls through. But did they achieve success at the end? Yes. Could they have achieved success in other fields than wrestling if they were given that same attention to what they wanted to do? Does that matter? I don't know. But those are the things I think of. And it did seem that they inspired women's wrestling in India to gain some popularity. Is that still true now, or is that true then? I want to see a behind the scenes, a behind the story of the story. Because it had all the elements of a good sports biopic. You had the underdog, you had the training montages, you had the bouts, the matches, the games that come down to the wire. It has to take a Herculean effort to succeed. You know it's got to happen because that's what makes a great sports biopic. And we had that here. Plus some. We had it and then more. I'm still thrown by the way they aged Amir Khan through this whole thing. Because remember, my first experience with him was in 3 Idiots. He's playing a college guy. Now he's playing a guy through 10, 15, 20 years of his history. Amazing performance. Both the older girls and the younger girls were, I don't want to say adorable. It feels like it cheapens their work. But they were both great what they were doing. Cousin was hilarious. But I guess in the end, this movie does what I think a good story based on true events does. It makes me want to know more about what really happened and what they're doing now. So I guess that's what I'm going to do next. I'm going to go online and see what they've all been up to and how much of this was real and how much of this was grandeur. But another solid pick, y'all. Thanks so much for letting me know. I know it's been a while, and I hope that this watching was worth it, because I do appreciate all of y'all's when you drop your comments and give me suggestions. And if I can make it happen, I will try to. I'll do my best, see what we can do. But thank you so much for being with me on this adventure. Please, as always, take care of yourselves, stretch your bodies, get your protein in, just have 5 seconds of joy, and then come back and see the next video in the queue. So thanks again, y'all, and until next time.